molecule, if you see, there is no shift electron cloud because there is no difference in the electronegativity. But when the alkene comes in contact with a positive negative species, okay, H has the partial positive charge and the X group has the partial negative charge. When it comes in contact, then the shift of electrons takes place towards either of the two carbons. Randomly, I have shifted towards this carbon, but it can be towards the other carbon as well. Okay. And so then this leads to the formation of, now always remember बेटा देखो और याद करने हैं, तो एक चीज ऐसी है जो कि हमें बिल्कुल बाय हार्ट पता होना चाहिए और वो है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, तो हम कोई भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं. जैसे इस केस के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन का पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट किया. ठीक है, चलो पहले एक चीज समझते हैं. आपके पास एक स्पीशीज है ए बी. अगर मैं इस ए बी के अंदर, एक सेकेंड डॉट गलत लगा. So in this AB species, ideally this should be the position of the electron pair. Now when I say this electron pair is between the molecule A and B, Shikha, please mute yourself. So here, now there is a possibility. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है A ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, A ने एक दिया और B ने दूसरा कंट्रीब्यूट किया. But if I say I'm shifting this pair of electron towards B, what does this mean? This means कि B ने एक जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो वापस लिया और जो A का इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया. This gives rise to A plus and B minus. Okay, so here in this case, in the carbon-carbon double bond, if I shift the electron pair towards either of the carbon, then what happens is this carbon, अब ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं. So this shift of the electron pair make carbon negative and this carbon will become positive. Okay, so now I am left with positive charge on this carbon and then I have these two bonds are intact, ये दोनों bond, and this negatively charged carbon will be attacked by the H positive here. So H will come here. Okay. Now in this case, the attacking species is going to the carbon where the electron pair shift is taking place. Means electron pair जहां जा रहा है, अटैक उसी कार्बन पे हो रहा है. इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे गया और इसी कार्बन पे H किया. Like somebody in your class has explained what is a plus E effect. किसने आंसर किया था बेटा? विशाखा. किसने? विशाखा. विशाखा ने. Okay, so this effect is known as the plus E effect. Okay, इंडक्टर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका दो तरह का होता है, प्लस ई और माइनस ई. सो प्लस ई इफेक्ट वो है जहां पे द अटैक टेक्स प्लेस ऑन द सेम कार्बन वेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर इज मूविंग. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. In the another
example, if I have a carbon-carbon double bond, and now if I attack the HCN molecule, okay, which means here the attacking species, this is minus and this is plus, okay, and take KCN, that will make it more clear. Now what happens is during the electromeric shift, yes, during the electromeric shift, if this is how the electron pair is moving, this carbon will become negative and this carbon will become positive. So negative carbon will not be attacked by this cyanide, but the positive carbon is attacked. So what happens is here in this case, what will you get? You get CN will attack at the positive center and we are having a negative charge here. Okay, so the attack is taking place at the carbon other than the carbon where the electron shift was taking place. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे आपका हुआ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और अटैक कहाँ पे हुआ साइनाइड का अटैक दूसरे कार्बन पे हुआ, which means the attack is taking place at the other carbon. Okay. So this effect is known as the minus E effect. So minus E effect, the attack takes place at the other carbon where the shift of electron is taking place. बच्चे क्या ये बात दोनों क्लियर होती हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So one thing about the electromeric effect I want to say is, so as I told you, this is a temporary effect. And secondly, in this effect, only the pi electrons, okay, can participate, no sigma electron. So this effect, the electromeric effect, is not observed in sigma electrons. This is very important to understand. Okay, so whenever you talk about the shift of electrons in the electromeric effect, it is only the pi electrons you will be talking about. So that pi electrons could be alkene, carbonyl, cyanides, nitros, any compound, but it cannot be in the sigma electrons. Okay, so far we have learned that the electromeric effect is a temporary effect. It takes place during the reaction. One. Secondly, only the sigma electrons they participate in this. Only the pi electrons they participate, and this effect, electromeric effect, is not observed in the sigma electrons. Whereas in case of inductive effect, we have understood that the effect is observed in the sigma electrons only, and which is a permanent effect. Okay, so let us now talk about the third effect, and that is the resonance effect. So now when I talk about the resonance effect, when I talk about resonance, रेजोनेंस सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा मॉलिक्यूल आता है? बेंजीन, है ना? Bencene. बिल्कुल,
मतलब हम इतने हजारों मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, but till date even when I talk about the resonance, the first or the simplest molecule which comes to my mind is benzene. So we have learned the the calculus structures for the resonance. These are the two structures we have learned so far. These are the two calculus structure, and in this structure we see that one of the structures, these two carbons, they have the pi bond, and whereas in the other structures these two carbons, they have the single bond. So if somebody asks me what is the real structure of benzene, can I say structure 1 is the real structure? No, I cannot say that, because structure 2 is also a structure of benzene. But can I say structure 2 is the structure of benzene? No. So structure of benzene is neither 1 nor it is 2. So these are the calculus structure which you have learned so far. These are the calculus structure. But besides these, there are other structures also which are known as the Dewar structure. In the Dewar structure, okay, बेंजीन बनाने के लिए ये सबको मालूम है कि each carbon in the molecule is sp2 hybridized. Everybody knows this? Yes or no? Yes, ma'am. Each Yes, carbon ma'am. is sp2 hybridized. Means in case of benzene, each carbon is having 1 electron each. Okay. Now when the bonding takes place, let us say bonding takes place here between these two and between these two. So this gives rise to the benzene molecule. So there is a ring formation. Let us now assume a situation where there is bonding between these and there is bonding between these two. So what happens? These two are left unpaired. इसको हमने पेयर कर दिया, इसको पेयर कर दिया और इसको पेयर कर दिया, तो ये और ये अनपेयर्ड बच गए. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Similarly, if you have बच्चे, are you with me? Able to understand what I am trying to say? This structure. Yes, ma'am. And similarly, if you pair this and this, अच्छा ये सेम ही बना दिया मैंने. Now if you pair this and this, these two will be left behind. Similarly, in the third structure, there are again 6 electrons, and if you pair if you pair
this and this. Then these two are left behind. So there are three possibilities that instead of having a alternate 3 pi bonds, the opposite sides they get paired up and leaving two unpaired electrons. So these three structures, structure 1, 2 and 3, they are known as the Dewar structure. This structure and this structure, these are known as the Dewar's structure. Okay. So when we talk about the resonance in case of benzene, so it is not only the Kekulé structure, but it is the Dewar structure also, which plays a very important role. So now we have understood that in case of resonance of benzene, there are 5 structures which actually contribute. Structure 1, 2 are the Kekulé structure and 3, 4, 5 are the Dewar structure. Now the question is, why do we not consider these 3 structures? कि जब भी हम एरीन की बात करते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं, हम सिर्फ Kekulé स्ट्रक्चर बनाते हैं और छोड़ देते हैं. हम देवार स्ट्रक्चर्स की बात ही नहीं करते. कभी पढ़ा आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 तक देवार स्ट्रक्चर के बारे में? No, ma'am. No, ma'am. Because the contribution of the Dewar structure is so less that we do not even consider it. Okay, so in the resonance, now let us understand few of the basic concepts of the resonance. The first thing about the resonance which all of us should understand is the contributing structures have no real existence. This means if I'm talking about the structure 1, 2, 3, 4 or 5, out of these 5 structures, no structure is a real structure. Benzene ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है. Then what is a benzene? If you really ask me, benzene is this molecule. This is a real benzene where the actual structure is a hybrid of all possible structures. So in case of resonance, the individual structures, पहला point, in case of resonance, the individual structures, they do not have any real existence. It is only the hybrid structure which exists in reality. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा सब लोगों को? पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes. So the individual structures have no existence. बेंजीन में Kekulé 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 2 भी नहीं करता, ना देवार के तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. The real structure is the hybrid structure. This is the real structure of the benzene. Point number 1. Second point, now how to arrive to the various structures. When I say I have to come to a conclusion of some structures of benzene from structure, let us ignore the Dewar structure because I will just explain you why Dewar structures are ignored. They are not considered. So when I say in case of arenes, if I do this arrow movement, this means the carbon where I'm shifting the pair becomes negative. The next carbon becomes positive. ठीक है, ये कार्बन आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया.
नेगेटिव कार्बन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां शिफ्ट कर देंगे. That means this carbon becomes negative, this becomes positive. So this is positive, this is negative. This forms a pi bond. यहाँ पे एक bond formation हो गई. Now what are you left with? We are left with a positive here and a negative here. If I shift the electron pair towards this, then what will happen? This was a positive center, this becomes a negative center, so there is a bond formation here, and this is a negative center, this becomes a positive center, so there is a bond formation here. So from calculate 1 we have arrived to calculate 2 structure by doing what? By shifting the electron pairs. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने जब मूव किया तो हम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे पहुंचे. Now the question is, what type of electrons are shifted? And the answer to that is, in case of resonance, only the pi electrons and the lone pair of electrons, they can shift. They can give rise to the resonating structure. तो 2 पॉइंट अब तक हमने रेजोनेंस के पढ़े हैं. पहला पॉइंट, नो स्ट्रक्चर इज अ रियल स्ट्रक्चर. The contributing structures are not the real structure, but the hybrid structure is the real structure of the molecule. Okay. Second point we have learnt is, to arrive the various contributing structures from 1 to 2, only the pi electrons or the lone pair of electrons can move. No other electrons, means the sigma electrons do not participate. Okay. Sigma electrons do not participate. Only the pi electrons and lone pair of electrons can participate in the delocalization. Is it clear? बेटा दोनों पॉइंट क्लियर हुए ये? So this is point 1. This is second point, and the third point now I would like to tell you is, in case of resonance, the shift in the nucleus is not allowed. Shift in the nucleus is not allowed. Now what does this mean? When we say the shift in the nucleus is not allowed, what does this mean? This means the shift in the position of atoms cannot take place. For example, now when I say, जैसे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. CHO CH double bond double bond CH. एक सेकेंड इरेज करना पड़ा. Okay, now this is ketoenol tautomerism. So here if you see, this
hydrogen from the CH3 has migrated to the oxygen. Okay, so this is not resonance. So this is not resonance. So here when there is a shift in the position of the nuclei, or an atom is leaving its place and going to some new place, this is not allowed in the resonance. In case of resonance, only electrons can move. Okay, so one thing we need to understand, that in case of resonance, the shift in the nucleus is not allowed. One second, beta. One second. There's a lot of disturbance. So here, one thing we all need to understand here is that in case of resonance, the shift of the nuclei is not allowed. You have just seen that in case of benzene, I have shown you only the electrons movement is allowed. Whenever we write any resonating structure, जैसे आप सभी लोगों ने एसीटेट आयन के केस में अभी मैंने आप लोगों को बताया। आपका मान लिया ये एसीटेट आयन है। अब इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, CO माइनस, यहां से अब इधर चला गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर के डबल बॉन्ड। ओके, सो only the electrons have moved. No nuclei shift is allowed. So the third postulate which we need to understand in case of resonance is that the shift in the nuclei is not allowed. बच्चे तीनों पॉइंट क्लियर हुए अभी तक सबको? समझ में आते हैं सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us now come to the next point. So here the fourth point is, in case of resonance, now like in case of the arenes, we have just seen one second. In case of benzene, I have just told you that these structures, their contribution is very little. This structure, and this structure, their contribution is very little. But the calculate structure, calculate 1 and calculate 2 structure, their contribution is maximum. Why this is so? So the next point of resonance is those structures which have got maximum stability will contribute the most towards the resonance. Okay, again I am repeating, the structures which are more stable will contribute more towards the hybrid structure formation. So as we can see in the Dewar structure, it is a biradical structure. You have two unpaired electrons. Here also you have two unpaired electrons. In the third structure also you have two unpaired electrons. So when we talk about the Dewar structure,
in all the three Devars structure, there are unpaired electrons. So when we say in the Devar structure, the contribution is very little from the Devars, and because structure 1 and structure 2, they are more stable, the contribution, the major contribution is coming from them. Okay. That is why structure 1 and structure 2 or the Kekulé structure, their contribution is maximum and the contribution of the Devar structure is very, very little. Is it clear to all? So in the nutshell, we can say that those structure which are more stable will contribute more towards the formation of resonance hybrid structure. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about others? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. good. So in case of resonance, अब आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, चलो लेट अस से लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल. बेंजीन का तो हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत कॉमन है. लेट मी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल जो कि आपको बहुत फेमिलियर लगेगा. CHO, acetaldehyde. Acetaldehyde, how can I write the acetaldehyde? CH3 CH double bond O. And what is the resonating structure possible for the acetaldehyde? CH3 CH O minus C plus. So the electron pair has shifted towards the oxygen. Now when I say acetaldehyde, it exists in structure 1 and structure 2 forms. How do we write acetaldehyde as a more common structure? क्या कभी हम लोग acetaldehyde का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं ये वाली फॉर्म में, प्लस माइनस फॉर्म में? नहीं लिखते ना. क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था फिनोल एंड फिनॉक्साइड. फिनोल के जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, ये फिनोल है, इसके जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो कैसे बनाते हो? बनाने आते हैं सब लोगों को? Yes, ma'am. बनाइए, अपनी नोटबुक में बनाइए सब लोग.
Okay. Now if you see how I have drawn the various resonating structures, I just draw one big structure, and accordingly you should be able to draw rest of the structures. Oxygen has a lone pair. If I shift this electron pair away to this carbon, then this carbon becomes positive, this carbon becomes negative. This positively charged carbon pulls the lone pair from the oxygen. So this carbon becomes negative and I will have a double bond formation जैसे coordinate linkage होती है between the lone pair and the carbon positive here. So the double bond will come here. अब आप ये कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास कैसे आया, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो पहले सिर्फ ऑक्सीजन पे रिसाइड करता था, नाउ इट हैज बीन शेयर्ड बाय द कार्बन पॉजिटिव. तो आपका पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा कार्बन से तो कहीं तो जाएगा ना, अब ऑक्सीजन पे इसलिए शिफ्ट हुआ है. ओके, सो द ऑर्थो पोजीशन बिकम्स नेगेटिव. Then this, what I am left with in the first calculus, in the first resonating structure, if you see here, so in the first structure here you can see that I have a positive charge on the oxygen and I'm left with a negative charge on the carbon here. Now to go to the next resonating structure, how can I write? I will be shifting this pair away from the charge. क्योंकि negative charge है तो वो दूसरे electrons को repel करेगा. Okay, when this is repelled, this becomes negative, this carbon becomes positive. So positive negative के बीच में double bond बन गया और यहाँ पे electrons का negative charge बच गया. क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना समझ में आ रहा है? बेटा आप सभी लोग स्कूल में बहुत तरह से रेजोनेंस ड्रॉ करना सीख कर आए हो, बट इन कॉलेज दिस इज हाउ वी ऑलवेज ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. कई बच्चे मैं देखती हूँ रिंग के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया और यहाँ पे इधर शिफ्ट करते रहते हैं, इस तरह से शिफ्ट करते हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाते ही नहीं है, बॉन्ड को दिखाते हैं कि जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया. बॉन्ड अपने आप शिफ्ट नहीं होता. हमेशा याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है? बॉन्ड अपने आप मूव नहीं करेगा. बॉन्ड तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. So you should have an eye how to look at the molecule, to how to look at a reaction in terms of the movement of electrons. अगर आपको movement of electrons समझ में आती है बेटा, तो आप कोई भी reaction लिख सकते हो, कोई भी mechanism predict कर सकते हो. तो इसलिए पहले हम जो भी सीख कर आए हैं क्लास 12 तक, अब उसको छोड़ करके नए तरीके से ऑर्गेनिक को देखना शुरू करो. हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाउ डू वी एक्सप्लेन कि द OH ग्रुप इन द बेंजीन रिंग हैज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. एक चीज रेजोनेंस में जो आपको हमेशा याद रखनी है बाय हार्ट, कि रेजोनेंस तभी होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल होते हैं. इसका क्या मतलब है? If this is my benzene
In case of benzene, we say is a delocalization of electrons. ठीक है ना, हम कहते हैं ना delocalization है, ये Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन्स का delocalization है. क्वेश्चन इज delocalization क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं होते तो delocalization हो ही नहीं सकता. ये सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए ये देखो, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है. अब नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जब मैंने बनाया तो ये वाला लोन पेयर भी यहाँ पे बीच में घुस गया. इसका क्या मतलब है कि आपका जो OH ग्रुप का लोन पेयर है वो भी इसके पैरेलल है. ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना बेटा? Yes, ma'am. तो जो ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ऑक्सीजन का ये देखो, इसकी रियल टाइम पिक्चर OH की, एक लोन पेयर इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है. ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. sp2 का मतलब ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, मैंने सबको बोला था रिवाइज करके आने के लिए. तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होती है तो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर. ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ट्राइगोनल प्लेनर में एक बॉन्ड हो गया आपका कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड क्या है? तीसरी जगह कौन लेगा sp2 में? तीसरी जगह लेगा Lone pair. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर कौन लेगा जगह? दूसरा लोन पेयर. तो अब ये जो p ऑर्बिटल है इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पैरेलल हो गया. ये पैरेलल नहीं है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता रेजोनेंस में. सो दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. ओके, ओनली दिस रेजोनेट्स. हो सकता है ना, नहीं तो हम बोल सकते हैं ना ये क्वेश्चन कि मैम ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर हैं, तो दोनों क्यों नहीं रेजोनेट करते, सिर्फ एक क्यों करता है? वही रेजोनेट करता है जो पैरेलल होता है. जो पैरेलल नहीं है वो रेजोनेट नहीं करेगा. ये थंब रूल है रेजोनेंस का बेटा. सबको? अनीश कुमार, नॉट देयर. अमलान दल बहेरा, भरत. Yes, ma'am. समझ में आया बेटा रेजोनेंस? Yes, ma'am. क्या बताया मैंने अभी? Which point, ma'am? Last point which I had discussed. The shifting of electron cloud. What shifting of electron cloud? Can you explain me? Yes, Bharat. हाँ जी. Yes, Bharat, we are waiting. If you know the answer, please tell Ma'am, that also. like it will be like parallel to I mean resonance will be present only if resonance will be exhibited only if like the electron cloud is parallel
Yes, good. Chandar, is that clear to you also? Yes, ma'am. Yes, Chandar. So the necessary condition of resonance is the planarity. If the electron clouds are parallel, only then the resonance takes place. If they're not parallel, the resonance is not possible. Okay. So now your homework for today is to draw the resonating structures for the benzaldehyde. नोट कर लो बेटा. नेक्स्ट क्लास में किसी की भी मैं फाइल या किसी की भी कॉपी से अपलोड लूंगी in the class itself. So one thing, make it very clear that when you are writing the resonating structures, you have to draw the resonating structures the way I have drawn. अपनी मर्जी से हम नहीं बनाएंगे, आपको resonating structure बिल्कुल इसी तरह से बनाने हैं जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की टर्म्स में कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से कहां जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपके अब चार्ज बन रहा है. ठीक है? Is it clear? So please note down the molecules for which you need to draw the resonating structure. First one is benzaldehyde. Second one is chlorobenzene. Third is nitrobenzene. And next is benzene nitrile, CN. So these are the 4 different molecules for which you will be writing the resonating structures. सब अपने नोट्स पूरे रखिए, क्लास नोट्स. और जो स्पेशली आपको अगर कोई चीज होमवर्क के लिए दी जाती है तो वो आप ड्रॉ करोगे, उसको लिखोगे, एंड नेक्स्ट टाइम आई मे बी आस्किंग एनीवन इन द क्लास टू जस्ट शो मी द नोटबुक. Okay, so when we talk about the resonance, one phenomena we have understood is the planarity. The resonance is possible. The next point which we have learned about the resonance is that the resonance is possible when the electron cloud is parallel to each other. So this lone pair is parallel to these pi electrons. That is why the participation of this lone pair of the oxygen is possible. And that also explains why the other lone pair of the oxygen cannot participate in the resonance. Okay. Next thing about the resonance is how to represent a resonating structure. Please note that the various resonating structures of the resonance, they are separated by a double-headed arrow like this. This type of arrowhead is used to separate the two resonating structures. ठीक है? If somebody draws this kind of arrow in resonance, this is absolutely wrong. This is a sign of reversibility. Okay, this is reversibility, and this is a sign of resonance.
So when we talk about the resonance, only this type of arrowhead you need to draw to separate the various resonating structures. ये बात क्लियर है बेटा, सब लोगों को समझ में आती है? अब ये जो एरोहेड है ये बताता है ए और बी में, ए बी में कन्वर्ट हो गया, बी ए में कन्वर्ट हो गया. ये रेजोनेंस नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है या रिवर्सिबिलिटी है किसी भी रिएक्शन में, कि ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है. They are in equilibrium. So this arrowhead, it shows the sign of reversibility and it shows that the equilibrium has been attained. Whereas this arrowhead, it talks about the resonance, means this and this are interconvertible in a way that you cannot separate the two. They are inseparable. क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा रेजोनेंस की? Yes, ma'am. So let us just summarize what we have learned so far in the resonance. In the resonance, we have learned that first thing in resonance is that the real structure of the resonance is the hybrid structure of the various possible structures. The individual structures, they have no real existence. This was the point number 1. Second point is only the sigma electron, only the pi electrons and the lone pair of electrons can participate in the resonance. अभी हमने एक फिनोल का एग्जाम्पल किया जिसमें हमने देखा कि लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके, सो द pi electrons and the lone pair of electrons can participate in the resonance. No sigma electrons can participate. Third point is the shift in the nuclei is not allowed. Only the electrons can move. Okay. Second, the fourth point which we have learned is the planarity is the necessary condition for the resonance to take place. The resonance is possible only when the orbitals are parallel to each other. If they are not parallel, like this lone pair we have seen, in this lone pair does not participate because it is not parallel to the other electron cloud. Okay. So this electron pair was not participating, non-participating. Another thing which we have learned in the resonance is whenever we are writing the resonating structure, always write the resonating structure in terms of the movement of electrons. Okay, just forget whatever you have learned so far in terms of the movement of bonds or inside the ring. All these structures, they are not the correct way of representing. Always write the reaction in terms of the movement of electrons. Next property is how to separate the resonating structure. The resonating structures can be separated by a double-headed arrow. And one more point which I had tell you is when it comes to the contribution, the structure which is more stable will contribute more towards the formation of the hybrid structure. ठीक है? And the structure which is less stable will contribute less towards the hybridization. जैसे आप लोगों को मैंने एक वो एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल बना के दिखाया था. एसिटल्डिहाइड के केस में जो चार्ज स्ट्रक्चर था
CH3 CH, ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि ये चार्ज स्ट्रक्चर और इसकी स्टेबिलिटी कम है। ऐसे ही फिनोल के केस में फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है फिनोल के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव, द चार्जेस आर सेपरेटेड, so they are less stable. In case of phenoxide, the charge, there is no separation of charge, so it is more stable. Okay, so those structure will show better resonance where the contributing structures, they have comparable stability. Is it clear to all the concept of resonance? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is all about the resonance. So next class we'll do some application part of the resonance.